probability today. So the basic definition of probability is the same as O-level definition, which is probability equals number of required chances upon total number of chances. For example, if we throw a die and we need to find the probability that this number on the top is an odd number, then we have 1, 2, and 3 odd numbers in a die. So number of required chances would be 3 upon total chances are 6. So half is the probability of getting an odd number at the top. Then you must know what is probability A union B. We have two variations of this. Let me just write that in the center. Probability A union B. So we have a case like this, where sets A and B are like this. There's no common region. And we have a case like this, where they are overlapping. We call this set, these set, the A and B, sets A and B, mutually exclusive. Mutually exclusive. And this would be non-mutually exclusive. So in the case of mutually exclusive events, write events next to it, and these are non-mutually exclusive events. So if two events are mutually exclusive, then probability A union B is simply equals to probability of A plus probability of B. And if two events have some overlapping values, then probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Can you give me an example of mutually exclusive events? For example, this is a case of getting odd number at the top of the die, and this is a case of getting even number at top of the die. So they don't have any common value. So these are mutually exclusive events. So in that case, probability of A union B would be probability of A plus probability of B. Mutually exclusive, non-mutually exclusive events could be, okay, we have prime number here at the top of the die, and we have even number here at the top of the die.
So then 2 is common between both of these. प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं डाई में? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है. And even is 2, 4 and 6. So we have a common value here. So this is a case where the two events, getting a prime number at the top of the die and the event of getting an even number at the top of the die, they are not mutually exclusive. So if it's an event like this, we use this formula, otherwise we use this formula. Okay. Next, there's a formula for probability A and B. This is read as A or B. Please write or at the top. A or B. Unit means or. Now we're discussing P, A intersection B. Probability of A intersection B, and this intersection means and. Now this is equals to probability of A times probability of B. But this is only true for independent events. Now, what are independent events? Independent events are events that do not affect each other probability. Like probability of first event does not affect probability of second event. Okay. So, example of independent events, probability of getting 2 and 3 on a die. Probability of getting 2 at the top of the die and then get it in 3 at the top of the die. So what's the probability of getting 2 at the top of the die? It's going to be 1 by 6. And then times, what's the probability of getting 3 at the top of the die? That's also 1 by 6. So the probability of 2 or the first event did not affect the probability of the second event. So these are independent events. So in this case, the formula will be applicable. Probability A and B would be equals to probability A times probability B. Non-independent events क्या होता है? Probability अच्छा यहाँ मुझे probability नहीं लिखना चाहिए था. I should have written occurrence of first event.
occurrence of first event does not affect probability of second event or occurrence of second event. Probability और occurrence दोनों ही ठीक है वैसे. Okay. Non-independent events होते हैं when occurrence of first event affects probability of occurrence of second event. कैंडीज बनाने की कोशिश हो रही है. Find the probability first candy is red and second candy is green. So two candies are drawn from this box. And we have to find the probability that the first candy we got is red and the second candy we got is green. So रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5. हाँ, अगर रेड पहले आ गया तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो रही है. 2 अब or वो 4. क्या? 2/4. So these are not independent events. So these are वैसे आपने शुरू वाले स्टेटमेंट में लिखवाया था कि दिस इज ओनली ट्रू फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो डिपेंडेंट नहीं है कि अगर एक रिमूव हो गया तो दूसरे को भी इफेक्ट होगा. हाँ, तो ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट है ना, नॉट इंडिपेंडेंट. मैम डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि डिपेंडेंट ही है, हाँ. एक के ऊपर इन दूसरा डिपेंड कर रहा है. कर रहा है ना, इसीलिए तो मैंने नॉन इंडिपेंडेंट लिखा है. दैट मैम मीन्स मगर इसके ऊपर इससे पहला स्टेटमेंट था उसमें लिखा था इंडिपेंडेंट होने चाहिए दोनों को. हाँ, तो वो ये केस है ना, ये दोनों अलग अलग केस है. इंडिपेंडेंट तो ये डाई वाला केस था और डिपेंडेंट ये कैंडीज वाला केस. ठीक है मैम. ओके. अच्छा, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना कि प्रूफ इवेंट A and B are independent. So you have to prove that probability A intersection B would be equals to probability A times B. दोनों की अलग अलग probability निकालेंगे और अभी हम केसेस देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे. बट इस तरह प्रूव होता है कि पहले आप A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर A की अलग से B की अलग से, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल सी दैट यू गेट द सेम आंसर ऑन बोथ साइड्स. फिर क्वेश्चन आता है प्रूफ इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसकी हमने शुरू में बात की थी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
ये वाले इवेंट्स थे. So you have to show that probability of A intersection B is 0 here. These are not mutually exclusive. तो इसमें A intersection B, sorry, A union B किसके equal होता है? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So if this region is 0, that means that these events are actually mutually exclusive. आपने ये दिखाना होता है कि probability A intersection B should be 0. So when you have to prove two events are independent, you have to show the probability A intersection B equals probability A times probability B. And when you have to show that events A and B are mutually exclusive, then probability A intersection B should be equals to 0. Okay, now we talk about conditional probability. Okay. Conditional probability is probability of A given event B has occurred. Probability of event A given that probability B has already occurred. Represented by probability A given B. This is read as given. The slash is read as given. The formula for this is probability A intersection B upon probability of B. Similarly, probability of B occurring given A has already occurred will be probability A intersection B upon probability of A. You may also write B intersection A, same thing. ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी है क्या? बिल्कुल. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो मेन ए लेवल की प्रोबेबिलिटी है, वरना तो बाकी ओ लेवल्स वाला ही है. ओके. अच्छा, अब इस फॉर्मूला का यूज करके भी आप प्रूफ कर सकते हो कि इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट. सो प्रूफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. तो एक तो हम ऑलरेडी मेथड डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट मेथड. मेथड 1 इज probability A intersection B हम दिखाएंगे कि is the same as probability A times probability B. Method 2 is you'll show probability A given B, which we know is equals to probability A intersection B upon probability B, if these are independent events
तो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पता है कि प्रोबेबिलिटी ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी हो जाता है। ये खाली कब होता है? इफ इंडिपेंडेंट। So that means that probability A given B should be the same as probability of A. If that's true, then it's independent. Similarly, probability B लेकिन given मेथड ट्रू हो जाए। hmm क्या मैम कह मेथड ट्रू नहीं होते, मेथड ट्रू। मेथड टू ये है कि हम ये फॉर्मूला यूज करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है जो हम प्रूव कर रहे हैं कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि ए एंड बी, तो सिंपली हो जाएगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाली बात। तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है और आपके पीछे पास खाली इसकी प्रोबेबिलिटी रह जाती है जो ऊपर अल्फाबेट होता है उसकी। सो अगर आपने ये प्रूव कर लिया क्वेश्चन में कि जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर इट्स द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग, then the events A and B are independent. And if it's probability B given A, then it must be equals to probability B. If you're able to prove that from the given data, that means that B and A are independent. Now we do a question that I write on the board and we'll copy. Conditional probability की practice करने लगे. Let me see if I can type. It is तो नजर ही नहीं आ रहा. Bold करें. How do I increase the size like this? It is known that among all the patients displaying a certain set of symptoms, the probability that they have the disease is 0.01, 0.001. This will take too much space. चलो इसको छोटा कर देते हैं. A test for the disease has been developed. The test shows a positive result. ये लग बड़ा स्केरी रहा है, लेकिन इससे सिंपल एक ट्री डायग्राम बनेगी, कुछ भी नहीं. द टेस्ट शोज अ पॉजिटिव रिजल्ट. मैम क्वेश्चन है। हाँ जी, ऑन बुक का क्वेश्चन है. ऑन 98% of the patients who have the disease, who do not, who have the disease.
and on 3% of the patients who do not have the disease. The test is given. The the test लिखना नहीं रहा भाई. The test is given to a patient अजीब ही कोई मजाक हो रहा है. मैं एक बार दिखा देगी वो पूरा क्वेश्चन. ये लो. The test is अभी पूरा हुआ ही नहीं. The test is given to a patient and a positive result is noted. यार Find वैसे the बुक से probability. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप. हाँ ले लेना. मैं भी अगली दफा के लिए ले लूंगी. Find the probability that the patient has the disease. Okay, hope I haven't mistyped anything. It is known that among all patients displaying a certain set of symptoms, the probability that they have a certain rare disease is 0.0001. A test for the disease has been developed. The test shows a positive result on 98% of the patients who have the disease and 3% of the patients who do not have the disease. The test is given to a particular patient displaying the symptoms and it is recorded as positive. Find the probability that the patient has the disease. सबसे पहले तो हम इसको simplify करेंगे और हम इसकी ट्री डायग्राम बनाएंगे. तो पहली बात क्या की है कि probability डिजीज होने की ये है 0.0001. सो हम करते हैं डिजीज और नो डिजीज कर लें. सो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.001. सो तो फिर डिजीज ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 0.001 विच इज 0.999. सो ये हमने खुद से लिख लिया. 0.0 लेने नहीं है. ये बल्कि ठीक है. ओके 0.999. ओके. A test for the disease has been developed. The test shows a positive result on 98% of the patient who have the disease. तो ये वो पेशेंट है जिसको डिजीज है. तो अब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 98% of the time. That means probability of 0.98. That means इस पेशेंट का नेगेटिव रिजल्ट आने का चांस है 1 - 0.98 which is 0.02. तो ये खुद से एंटर कर दिया. ओके. उसके बाद it says a positive result on 98% of the patient who have the disease and on 3% of the patients who do not have the disease. तो अगर नहीं भी है
तो 3% चांस है कि इनका भी पॉजिटिव दिखा दिया जाए, जैसे कि यहाँ आईडीसी करती है इस्लामाबाद में, ना भी हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देती। ओके, और फिर नेगेटिव होने का क्या होगा, 1 - 0.03 प्रोबेबिलिटी होगी, विच इज 0.97, so that we enter on our। ओके, सो लेट्स रिपीट के क्वेश्चन में कहा क्या, क्वेश्चन ने कहा है कि एक डिजीज होने के चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है 0.01, तो फिर हमने इससे खुद कंक्लूड किया कि डिजीज ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.999। फिर अगर डिजीज है तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांस है 0.98, दैट मीन्स नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं 0.02। और फिर अगर डिजीज नहीं है तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है 0.03, और नेगेटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है 0.97। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या हुआ है ये हमने समझना है। क्वेश्चन ने कहा हुआ है द टेस्ट इज गिवन टू अ पेशेंट एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट इज नोटेड। सो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक इवेंट हो चुका है, पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है, सो इट्स गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गिवन पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट हमें पता है कि पॉजिटिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट हैज द डिजीज। तो अब आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डिजीज है गिवन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू probability of disease and getting a positive result upon probability of getting a positive result. So probability of disease and a positive result is here. Disease and a positive result. So that's 0.001 times 0.98 upon probability of positive result is here. डिजीज होके भी पॉजिटिव हो सकता है और डिजीज ना होके भी पॉजिटिव हो सकता है। सो इसमें हम क्या करते थे वो लेवल्स में, 0.001 टाइम्स 0.98 प्लस सेकेंड ब्रांच में जाते थे, एक ब्रांच को खत्म करके सेकेंड ब्रांच में जाते थे और बीच में प्लस लिखते थे, प्लस 0.999 टाइम्स 0.97। अच्छा, तो जो ऊपर पॉजिटिव है उसमें भी यही नहीं लगाया कि फॉर्मूला, क्योंकि पॉजिटिव के लिए दोनों ऊपर ऑप्शन का है, है मतलब डिजीज डिजीज है तो है आप। एंड पॉजिटिव है, तो डिजीज एंड पॉजिटिव तो ये वाली रो है, खाली ये वाली ब्रांच है, ये ब्लू ये वाली। 0.03 नहीं है? शायद हाँ, 0.03, सॉरी सॉरी, या 0.03। ओके, तो इससे जो भी आंसर आएगा, मैंने अपने पास लिखा हुआ है 0.03166, ये आंसर। ओके, मेरे ख्याल में इसे एंड करते हैं, अगला क्वेश्चन टाइप करने में ही 3 मिनट लग जाएंगे, तो कल इधर से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कल 2 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस करने रह गए हैं बुक से, और फिर कल हम वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी। टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो। लाफ मैम। अल्लाह हाफिज।